गुड मॉर्निंग टीचर एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कंचर शहीद भगत सिंह पार्क। आज मैं सोच रहा था किसका इंटरव्यू लूँ, कल आया ही नहीं था। संजोग से एक उड़ीसा के सज्जन आ गए, बातचीत होने लगी, कुछ उड़ीसा भाषा में उनके उनके से गाना गवाया, कुछ बातें की। बातें करने का मतलब होता है कि आदमी फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट। डू यू नो, फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट। चेहरे पे देखते हो वो कहाँ से आता, दिल से आता है। तो एक हमारा सवाल है यार, किस लिए लड़ते हो? मुझे बताओ, एक भी वैलिड रीजन, कोई भी वैलिड रीजन है? कोई वैलिड रीजन है? सब खाता है, सब सोता है, सब मरता है, किस लिए लड़ रहे हो यार? सीधी सी बात है ना। तो क्वेश्चन ये, चलो यहाँ पे आज थोड़ा हिंदी भी बोल रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश भी बोलेंगे क्योंकि सब समझने वाले इंग्लिश नहीं समझते। तो अब जैसे कि 21वीं सदी में हम रहते हैं, ठीक, और हमारा साइंस भी बोलता है कि हम डेवलप कहाँ से हुए? सेल से। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ह्यूमन, और फिर एक अगर इतिहास में आते हैं तो जो हमारा हेड क्या है? ब्राह्मण है, ये हाथ राजपूत है, ये पेट वैस है, ये पैर शूद्र है। जो जिस एरिया को डेवलप करता है वो बन जाता है ना। तो सपोज यू लेबर डे एंड नाइट, यू एक्चुअली गॉट द टॉप पोजीशन। द पर्सन हु ऑल द टाइम जस्ट किल द टाइम आर जस्ट butchering the time. Do you think it out there this should actually make a comment on you? No, nothing at all can say. Then the question here is that my mission here is to make India to be neat and clean. Not only just in a physical way, but in the mental way too. Unless mentally, I think mentally our mind setup is not actually good, certainly no food will be just making it to be changed like that. It's not sure. So before I move, your introduction please. I'm Shivraj Singh. Uh, I'm studying in CRP Public School, Rohini Sector 14. Very My good. parents' name are Okay, you tell. father's name is Surendra Mohan Singh. I met that gentleman that day. Yes. Yeah. And my mother name is Monisha Kumari. Very we have good. met actually. Yeah. Mother, did I meet? Mother, your mother? Yes. Okay. But I don't want to cognize it. You don't say. Okay, no problem. Your introduction over. You hail from perhaps, I think, your locality. I mean, Delhi is the center of just earning money. Is it not? Yeah. But somewhere somebody is actually settling. Maybe as a high help from Bihar. But I got the service in Arunachal Pradesh. Here I am operating in the field of sanitation like that. It's also service. It's not here. Then now the question here is that day I just interrogated you. I interfered you. Did you take that otherwise? No, not like that. It's not said. Unless and until we communicate, Yes. I don't think it about that anything emanate from my mind or your mind like that. Yes. Communication is essential. Who knows? Some of my words can change your life. Yes. Not sure. Another question here is that you are just young India. That day you told you want to become a businessman. What made you think like that? Money, of course. Money, of course. Yes. Yeah. Because in this modern world, money is everything for everyone. Without money, we can not afford anything. We can't do anything. Yeah. I want to earn some money for my easy life and comfort life. And like Ratan Tata, Yeah. he also used to donate. I also want to donate. Very good. Good thing here. Now question here is that your I think thinking is so. For the last 35 years, I never took even a single paise for the tuition sake. It's not here. This is my mission. Can you say what? Why? When I had to just get my education, I had to just take tuition at home at the cost of 15 rupees. That made me think the person who is rich and poor, that doesn't matter at all. If I can afford them free education, I afford. It's not here. Not to speak of in Arunachal Pradesh, here in Delhi too. Yes. In course of my moving, I simply talk to the children with a view to make them know how to speak English like that. Am I going right or wrong? I don't know. It's not here. But I do this. It's not here. The another question here is that your thought is something similar to me. My father was railway employee. I was living in Kottayam. Joint family was there. A copper is little. It's not here. And you cannot say that was not sufficient. Not sufficient in the sense I got the education from you can say 1000% Hindi medium school. But I can challenge anybody belonging to any part of the world to make a communication. I write poetry too, in English and the two. Translation of the very world poets like that, you can see. And this is how my life passes. I want to communicate to the person. Why? To know something and give something. My experience of life, it's not here. As you told it about that you want to have some money. Why some money? Not too much money, it's not here. Only some money is compromise is death. How will you just actually make it clarify like that? Like for a cozy life means not for like a chawl. Yeah. Just let me just clarify thing.
You struggle. After that, you simply just actually make a battle. Even then, success is not there. You surrender. It's not there. No. Just listen here. That is known as compromise is death. Wherever you compromise, maybe in your life, maybe in education, maybe with the very just fill of the communication, maybe any sort of thing. There you are getting nothing but a kind of, I think, deadness like that. Yes. The person moves on the road. They now don't get any mission. They simply make on one type of thing, that is comment. Comment, passing comment, not doing any sort of thing. Are your country is there. Abraham Lincoln simply told, what your country gives you, that doesn't matter. What you give to your country, that matters. Yes. Am I correct? Anna? Yeah. So now let me clarify the thing. The stalwart, Maharathi, it not here. Whosoever persons are there at the post of just at the post of just some sort of gold and silver, whatsoever things are there. Their life started from the ground. Yes. Yeah, maybe APJ Abdul Kalam is there. Yes. Maybe Abraham Lincoln is there. Yes. Maybe I think any of the person, maybe scientists, politicians, whosoever persons are there. Their background was poverty. Out of poverty, they created beauty. And out of beauty, they simply made some sort of civility like that. Yes. Am I correct? Yes. Now, you talked about this time into say money only because of one reason. The earning of your father is not sufficient to meet with the need. I know. Because I am also the son of the government servant. It don't say. Railway and CRP doesn't matter. Yes. Railway is also government organization, CRP is also government organization. Nature of work differs. But so far as money is concerned, it is confined. It don't say. Businessman, if you want to become rich, certainly you will have to just do business. Business, not the business selling this and that like that. But many times you find chai wala becomes millionaire. Yes. He is dedicated. So dignity of labor is there. What is dignity of labor? Working from your heart From your heart. for a goal. You Goal. want it, you will get it. Can you give an example? Like Modi ji, Modi ji, very good. they From the modern you can say, yeah. they sold tea Ah. in their stall. They also studied there, and now he is the prime minister of a country, of our country. Let me quote an example. Whenever anything actually comes out of the mind, all of a sudden, that you become. It's not here. Two examples I'm quoting, you can see. One example is, I think, Barack Obama. When he was in Indonesia doing class 4, his teacher asked, what would you like to become? He told, I want to become the president of my country. He was there. Yes. He was there. He's not here. You take my example, I wanted to join army. Because of the region, some of the very person, my uncle were there in army. I see the uniform, I was in NCC. But by the time period came, I couldn't compete. Do you know what is the reason? My age was 45. That's why my weight was only 45. It requires 60. It not here. In a day or in a month, you cannot make 15 kg to below. But I remember my teacher when I was doing BA honors in English from RD and DJ College from Bihar. He asked almost all the person, what would you like to become? I simply told after doing my BA honors in English, I will do B.Ed and become teacher. Or becoming teacher, I'm just before you. It's not said. So anything comes all of a sudden that you become. I put the question to the children only because of one reason. I put some of the seed in the mind so that he can go in the direction. What you don't get any direction, you are rudderless. Certainly, you will not be reaching to any very point. Then now you can say, sir, what about your direction here? Every day I make sanitation. Even every day somebody comes and make it dirt. Should I give up? No. Let it be continued. Let me quote here. Unless and until you reach to the goal, keep it continued. Otherwise, you will not be successful like that. Never fear. Because of the reason God has actually, if made you, God has also made for your fooding, living, everything. But that will not be coming easily to your pocket. For that, you will have to just make what? Labor. Such like that. How long have you been coming to park? From 7 years. From 7 years. Do you find any change in the park? Yes. In what respect? When I visited first time, it was really dirty. Very dirty. Yes. Someone. Piles and hillock of dirt were there just across this wall, Yes. all everywhere. There was just fly and you can say the mosquito and insects were there. You could Yes. say. 2 years ago also I saw the same thing, same scenario like that. It's not same. Someone No, Yeah. went to the corner and peed. हाँ. It was really. अरे that day we are very bold here. What for you are becoming just shy? No sir, no sir. बोलो एकदम फ्री से बोलो ताकि तुम खुल सकते हो.
and then a very bad smell comes out. Oh, ho, ho, ho. Life is consisting of the two, Yes. beating and eating. Yes. बीटिंग प्रीडोमिनेट। कहने का मतलब आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता भाई मेरे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ करना करोगे। अरे ये आप रुकिए, मैं थोड़ी सी बात कर। परेशान किस लिए हो गए? एक दिन बात किया था, ये तो बोलता आप मेरी मम्मी आपको जानता हूँ। नहीं, ये मौसी है। मौसी हैं, चलो मौसी भी आधी मम्मी होती हैं, है ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा से, उस दिन मुझे अच्छा लगा और इसको हमने कहा था बेटा एक दिन मैं तुम्हें थोड़ी सी बात करूँगा तुमसे, है ना। वही मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, आप सुन लीजिए, कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कोई बात नहीं, हाँ। जैसे पार्क में तुम आते हो, आई थिंक योर कंटेम्प्रेरी जस्ट एक्चुअली इन द सेम पीरियड दे जस्ट यूज abusive language. Yes. Who is responsible for this? The small kids. One day, a little time ago, in Dashera, in the previous Dashera, I visited here for the Ravan Dahan. I saw a small kid of 9 to 8 years. He was smoking, beading. 9 to 8 years, but I saw this much of the kid. It not here. They do not come because I take them in camera. In camera, my mission is somebody will see. They will take them particularly to the NGO, and after that, their life will be just a nice one, can say. But a kind of, I think, situation is there. You can say, नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना। Somebody is making a generation to be prepared so that this business can continue. Right? Not say. What about your opinion? It is the park of government. Let government handle it. Park should be closed in time, opened in time. It not here. If possible, let there be lathi to be used to make this unwanted any persons to be just driven from here. It not here. Whosoever persons are there, that doesn't matter at all. Or yeah. Can I Okay. tell something? Okay, bol. You tell. In this area, I saw many people and also the old men playing jua. Yeah. Gamble, you tell. No, Yes, gamble is gambling. yeah. They were gambling and also spitting the pan masala. Making the pot dirty. Yes. Yeah. Taking Every day, taking liquor too. Yes. So who should actually care for it? It is administration. Yes. We cannot actually handle or just interfere law and order. Law and order is the problem particularly of the police department or maybe the concerned authority like that. If they are actually just closing their eyes, if they are closing their ear and even mouth, this is not the age. You will have to speak. Camera doesn't tell lie. I simply take any person in camera only because of the reason it is recorded. If I tell something wrong, you just catch hold of me and you make me to be hanged. I will not be thinking like that. अब चलो थोड़ा सा हिंदी में बात कर लो, थोड़ा सा फ्री हो जाओ। It's our मातृभाषा. हाँ, मातृभाषा, national language you can say here, mother tongue and national language something different you can say here. Your mother tongue is Bhojpuri perhaps. Yes. या रवा कहाँ जात वानी, like that है ना। या नाचे गावे तूरे थान वके दुनिया राखे मान, ऐसे बोलते हैं ना लोग। आई बैठी पी पानी, है ना। तो मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ लेकिन समझता हूँ, कहीं थोड़ा से बोल लेता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे कि थोड़ा हम लोग टीचर हैं और तुम स्टूडेंट हो, इस ओर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तकरीबन 500 बच्चों से हमने पूछा होगा अभी तक पार्क में 2 साल में कि बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता, पहले स्कूल पूछ लेता हूँ। कुछ सरकारी के हैं, कुछ मैं प्राइवेट वाले, मैक्सिमम प्राइवेट वाले हैं। बेस उन लोगों का अच्छा नहीं है, खास करके कम्युनिकेशन में। उससे पूछो मैं जाता हूँ कि इंग्लिश क्या है, एकदम उसको तुम अपने ठीक बताया, गलत बताया, सही बताया। ये लोग बोल देगा आई एम गो, आई कैन गो, आई विल गो, लाइक दैट। इसमें उसको दोष मैं नहीं देता हूँ। उसको दोष किसको देता हूँ? जिस माहौल में है, जहाँ पढ़ने जाता है, उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है। और एक बात और भी मैं पूछता हूँ, व्हाट डू यू नीड इन एजुकेशन, इमोशन और प्रोफेशन? Profession. What about emotion? Emotions like in our school there is a subject value education and then when I Moral education कैसे? हाँ, फिर जब मैं आगे 6th में आया तो वो चेंज होकर बन गया एडोसेंस। अच्छा। मतलब वो जो सब्जेक्ट है हमारे टीचर्स चाहते हैं वो हमारे इमोशन से कनेक्ट होकर हमें और कुछ सिखाएं। अब जैसे देखो, पहले जो टीचर पढ़ाया करते थे हमारे टाइम में, एक आंसर लिखा दिया, वो तो बेटा इसको ऐसे भी पूछ सकता, ऐसे भी पूछ सकता, ऐसे ही पूछ सकता, ऐसे ही पूछेगा, आंसर यही होगा। अभी क्या होता, थोड़ा घुमा दिया तो बच्चे हाथ उठा देते हैं, है ना, नहीं समझते हैं। तो पहले जब पढ़ाते थे तो पीठ भी ठोकते थे। अब अभी जैसे मैं बच्चों से ही पूछता हूँ, आए ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, लिख देने के बाद उस समझा नहीं समझा उसको कोई लेना देना नहीं, है ना। ये लग रहा है लेकिन
और कहीं ना कहीं ट्यूशन इसको प्रमोट कर रहा है। लोगों को एक्स्ट्रा मनी चाहिए तो एक्स्ट्रा मनी क्लासेस में नहीं आते हैं। कभी कभी जब मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल में प्रिंसिपल था, हाफ ईयरली के टाइम में हमने देखा टीचर को बच्चों के क्लास 5 के बच्चों के इसमें आंसर स्क्रिप्ट में नाम लिखते हुए। हमने कहा क्यों नाम लिख रहे हो इसको? सर इसको लिखने नहीं आता था। मैंने 5 साल अब क्या किया? कोई बच्चा क्लास 5 में अगर पढ़ रहा है तो उसको तो नाम लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। नहीं आता इसका मतलब यू सिंपली मर्डर देम, यू आर मर्डरिंग, वी डोंट से टेकिंग द सैलरी बट नॉट डूइंग द थिंग, वी डोंट से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया whosoever persons are there, this type of I think inspections must be made, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड क्या होता है लोगों को बनाने का। जब ग्राउंड ही गड़बड़ होगा और कह सकते हो कि तुम्हारा फाउंडेशन ही गड़बड़ हो तो आगे जाके क्या करेगा? एजुकेशनली हैंडीकैप्ड कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। और यह अगर आगे बढ़ेगा उसके दिमाग में तो होगा तो हम पढ़े लिखे हैं, आता कुछ नहीं है, तो पढ़े लिखे के कतार में खड़े हो जाओगे, आता कुछ नहीं, उससे नहीं होगा। आपको एजुकेशन सही देना पड़ेगा, सब तक सही नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बात बता, हाँ बोलो, एक दिन दो बातें बताओ। हाँ बोलो बोलो। मैं एक्चुअली मॉनिटर हूँ अपने क्लास बहुत का। बढ़िया, थैंक यू। तो एक बार कोऑर्डिनेटर सर ने बुलाया था किसी काम पे, मैं गया तो अंदर किसी को पीटीएम चल रहा था, वो एक्चुअली 9th क्लास के थे। उनसे उनका नाम पूछा गया, उसमें भी उन्होंने स्पेलिंग में गलती कर दी। और फिर जब प्रिंसिपल स्पेलिंग लिखाई गई उन्होंने उसमें भी गलती कर दी। मतलब प्रिंसिपल 2 के होते हैं, जिसमें लास्ट में PLE होता है और दूसरे में PAL होता है। एक प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल है। PRINCIPAL प्रिंसिपल, PRINCIPLE प्रिंसिपल। एक सिद्धांत होता है, दूसरा प्राचार्य होता है, ये होता है ना। अब यहाँ पे दुख क्या रीजन है? अभी क्या होता है कि लोगों के पास हैबिट नहीं है, मतलब जब तक आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो भूल जाओगे। सपोज इफ आई थिंक आई एम रिटायर्ड, कि क्विट एवरीथिंग within a year, I will forget everything. This mind will be just empty mind. If I talk to the person, getting some new idea or just communicating like that, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो समाज है, अभी मैं कोट करता हूँ यहाँ पे E.R. ब्रेथवेट को। E.R. ब्रेथवेट ने बड़ी अच्छी लाइन की है, बिग सिटीज आर ड्रेडफुली लोनली प्लेसेस। समझते हो इसका मतलब? बड़े शहरों में हम रहते हैं, भीड़ में जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को लोग नहीं जानता, अकेलापन, भीड़ का अकेलापन। एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन कोई किसी को नहीं जानता, किसी से बात नहीं करता। उसके पीछे एक ही रीजन, ईगो। एक ईगो ने हम बड़े थे, हम बड़े हैं। दूसरा फियर, हम इससे बात करेंगे, हो सकता है हमसे पैसे मांगने आ जाए, हो सकता है कि कुछ हमको करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा घटना में लेकर चलता हूँ, ये कुछ देर के लिए। मऊ का नाम सुने? मऊ तुम्हारे मध्य प्रदेश में आर्मी का एरिया, कंटोनमेंट है ना। तो वहाँ एक बहुत बड़े ऑफिसर का माँ मर गई। माँ मरने के बाद 4 कंधा देने के लिए आदमी नहीं, तो आदमी तभी आएगा ना जब आदमी से आप बात करोगे तब ना, बात ही नहीं करोगे तो कौन आएगा? तो फिर हमारा भाई वहीं रहता, उसको किसी आदमी ने बोला, वहाँ गया, वो 4 आदमी को 500 रुपये दे रहा है। तो हमारे यहाँ बिहार में या जहाँ भी एक संस्कार है कि मुर्दों को कंधे पे लेने के लिए पैसा नहीं लेते हैं। 3 ने लिया, इसने नहीं लिया। तो क्या हम कैसा समाज बना रहे हैं? समाज वैसा बना रहे हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है ना। तो आने वाले समय में और विकृति होगी, हो सकता है बढ़िया भी हो, हम नहीं कह सकते खराब नहीं होगा। अच्छा, 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? मेंटली गुड, physically good, and all things are good in it. Very good. Not only good, the best. अच्छा, वन थिंग मोर इज देयर, जैसे कि हम आज इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, प्रोफेशनल बना रहे हैं, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, में आदमी नहीं बना रहे हैं। आपको नहीं लग रहा? आदमी नहीं बना रहे हैं। दया नाम का चीज़ लगभग खत्म, एक्सटिंक्ट हो गया। जब दया ही खत्म हो जाएगा, सहानुभूति खत्म हो जाएगा, तो क्या लगता है दुनिया में क्या रह जाएगा? केवल मारामारी। विल इट बी द एज ऑफ रावणा, विल इट द एज ऑफ कंसा, लाइक दैट यू कैन से। अब देखो ना, आदमी आदमी को काट देता है ना, टुकड़ा ही कर देता है। क्या ऐसा सपना हमने हिंदुस्तान को देखे? नहीं देखा है ना। तो खैर चलो, अच्छा कुछ पोइट्री वगैरह में इंटरेस्ट है? No, कभी I write only stories. ना स्टोरी यू राइट? एनी स्टोरी डू यू रिमेंबर दैट यू कैन जस्ट टेल लाइक दैट हियर? कोई बात नहीं बोल सकते हो, कुछ नहीं। अब जैसे कि मान लो चलो, मैं तुम्हें जब आया तो थोड़ी इंग्लिश में पढ़ा दे रहा हूँ जो कम समय में हो जाए। फ़ोन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉरी, फ़ोन का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश तो है ये। Phone, there are 2 meanings. नॉट ना, फ़ोन मीन्स साउंड, लंबा समय नहीं रहेंगे। फ़ोन मीन्स साउंड। Yeah. इसके बाद 3 और 4 वर्ड पे मैं आता हूँ। एक आता है एंटोनिम्स, दूसरा होता है सिनोनिम्स, तीसरा होता है होमोनिम, और चौथा होता है एक्रोनिम। तो पहले एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं। एनीथिंग or any word that is opposite in meaning is known as antonyms. Day and night, mother and father, sister and brother, like that. It's not here. Anything that is similar in meaning, that is known as what? Synonym. For example, light is there, Wims is there. Wims is there, will it do? है ना? अच्छा,
When you come to a homonym, you find two of the words are there. They are different in meaning, but The same in sound. same in sound. It's not so. Like EAT, eat, IT, eat. EAT, eat, IT, eat. Night, NIGST, KNIGST, night. Night, raat, or ye night, a post, and a status like that. Acronym. Do you know acronym? No, No. I haven't didn't studied it yet. Yeah. Abbreviation, you know. Abbreviation like PCJ, Prakash Chandra Jha, it's my name. In abbreviation, it is PCJ. Any of the abbreviation that is read like word, that is known as acronym. For example, WHO, World Health Organization. But when you simply look it over, you find it is acronym. Clear? समझ में आ गया? तो इसी तरह similarly, suppose if I teach you 5 sentences in a day, 150 sentences, I think 50 sentences will be in a month. You will be speaking fluently. That day I simply just actually got something, blasting. That will do it also. Keep it up, my dear son. Keep it up. God bless you. Good morning. This much, thank you.